So, okay, what we were doing is stereographic projection. आप में से किसी ने क्लास के बाद देखा इंटरनेट में व्हाट इज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? नो सर। यस नहीं देखा सर। तो इसको देखिए आप, इसके एप्लीकेशंस देखिए, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर से रिकॉल करता हूँ जो मैंने बोला था। So let us take the circle. मैंने कल आपसे S1 लेने को बोला था, but then I translated it. And now let us take this circle. Okay, circle centered at say this point is 0, half and radius 1. This is 1, 0, 1. Okay, or you may expand it, you may magnify it, and you can take this center as 0, 1 and this north pole as 0, 2. Okay, so this is diameter is 1, radius half. Okay, so can anyone tell me what will be the equation of this circle? Hello, yes. What would be the equation of circle? क्या होगा इस सर्कल का इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 0, 0 प्लस y माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर. ओके, सो अभी और इसको एक्सपेंड. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ circle. Okay, and you know we identify the real line with this x-axis. Okay, you know this. You have yesterday you have seen this that R is embedded into R2. Okay, and we identify R in R2 via this x-axis. There are other lines also, but we are taking this. What we are interested in is this circle minus this point. Okay, circle minus this point. So let me call this circle as S, call this as x-axis as X. Okay, then my claim is S minus this point 0, 1 is homeomorphic to X. So first what we have to do, we have to find a map which is bijective. Okay, then it is continuous. This map should be continuous, and lastly it should be inverse should be continuous. Okay, and is open. Okay, this is what you wanted to prove. Okay, so first of all, we have to find a function which maps S minus 0, 1, call this point as N. Okay, so this is S minus N. It's same is so there exists a bijection from S minus N to X. This is what we wanted. This is what we want at first. Okay, so how will we get this? We will do this via projection. So how will we define this projection? This projection is very simple. What you do, you take, so you need a map F from S minus N to X. Okay, so it should be 1 and it's down.
So think intuitively, इसको सोचिए आप, इमेजिन करिए, और आपके पास अगर कॉपी पेन है तो उसको बना भी सकते हैं. ओके, इसको इमेजिन करते रहिए जो जो हो रहा है. सो आप क्या करते हैं, आप कोई भी पॉइंट s minus n से उठा रहे हैं, मीन्स यू आर टेकिंग एनी पॉइंट इन द सर्कल एक्सेप्ट n. ओके, सो call that point say small s. Okay, it will be mapped to, it should be mapped somewhere in x. So what that point will be in x? So the point will be, say suppose this is your small s. What you do, you make a line, you draw a line connecting this n and s. Okay, it will must hit x-axis at a point, at a unique point. Call this point xs. Okay, so similarly, if you take another point, say let us say this point. Okay, you connect these two, it will hit exactly at one point. So this is how you define this is how you define the map f. This map is called stereographic projection. Okay, if you want to write this explicitly, what you have to do, you know, this s is a point, s is a point of this form, where x square plus y minus half square this form, which satisfies this, because this is in the circle. Okay, and you also know line passing through xy and 0 1. So line passing through xy and 0 1 is given by what it will be. Can anyone tell me what this line will be? X minus 0. Yes, so this is x. Wait a minute. So y1. So it will be y minus 1 upon x. Call it x naught, y naught. This is x naught, y naught. Okay. So x minus x1. Is this correct? Hello? x1 Is to this 0. correct? Huh? x1 0 है. Sorry. So this is x naught y minus x naught equal to y naught x minus x. Okay, so this is something x plus x naught y x naught y plus 1 minus y naught x equal to x naught. Can anyone confirm this? Is this correct? Or you may take this as the line. So this is one part. Okay, this is one equation. Other equation would be so it would be like this.
So it passes through N and S. Okay, it passes through N and S, where N is 0, 1. This is 0, 1. S is x0, y0. A line which passes through this point would be of this form. So say 0, 1 plus t of n minus n, n minus s is x0, y0 minus 1. So any line where this t belongs to R, okay, any line in R2 which passes through n, s can be written in this form. Okay, so this is a parameterized form. Parameter is t. So when this line meets x-axis, okay, when this line meets x-axis, this means y-axis is 0. Okay, so it will be of this form. So something say u, 0, this form. Okay, so here this y-axis is 0 means 0 equal to 1 plus t y0 minus 1. Okay, wait. Yeah, so this is one part, and x is t x0. Is this correct? Hello? Yes, sir. Hello? Is this correct? So if x0 is non-zero, then t equal to x by x0. Okay, what we do, so at no, not this. So t equal to so x equal to t x0, and we have to find this t. Okay, so see, this xs will be, if this s is x0 y0, then xs will be t x0, 0. This is what we found here, but we have to find t. Okay, t comes from here. Okay, so t is 1 upon 1 minus y0. So you get the exact formula for this f. Okay, so simply from an intuitive idea, so idea was you just connect n and s and extend this line, and it will must hit x-axis. That point will be the image of small s. This was the idea, and using this idea you found this map f. F is given by, I am writing that map, f of x0 y0 is 1 over 1 minus y0 into x0. Okay, comma 0. This is the map. Is there any doubt? किसी का कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं x और x0 y0 को xy लिख देता हूं. xy ओके. एनी डाउट? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? हेलो? नहीं हुई ना? हेलो? हाँ हेलो सर, हाँ, आप बोलिए पेन बोलिए. बदल दीजिए, दूसरी कलर ले लीजिए सर. ओके, हेलो? ठीक है.
ये कलर ठीक है? नहीं सर, Yes, आप sir. पिंक रेड या येलो से लीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ। तो अंदर बैठिए ना, बाहर क्यों बैठे हो? नहीं सर, अंदर नेटवर्क नहीं चल रहा है सर। तो इसके वो बढ़ाइए, इसको वो क्या ब्राइटनेस बढ़ाइए। सर सब किए हैं सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल आप या तो पिंक ले लीजिए या रेड या येलो ले लीजिए सर, वही दिखाई दे रहा है। ये ठीक है? यस सर, यस सर। ओके। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Is this okay to everyone? यस सर। Now, since this map fxy is x upon 1 minus y, okay, comma 0, you see y is not equal to 1, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट जहां पर y 1 था वो हमने ओमिट कर दिया, y is not equal to 1, ये वाला पॉइंट हमने ओमिट कर दिया, यहाँ पर y equal to 1 था. Okay, we have omitted that point, therefore y is not equal to 1. This means this function f1, say call it f1, f1 xy means x upon 1 minus y. This is well defined. Okay, well defined. And you see, these functions are to see this is continuous is very easy. This function is continuous. Please check this whether this is continuous or not. This is continuous. You may also see this via, you take any open any open set here. So this is an open set. Okay, so what you will get is the inverse image of this. It will be, so connect this. Okay, so connect this, so you will get this open segment. Okay, so you can easily see that inverse image of open sets in X is open in this. So we are doing this in subspace topology. Okay, so this means circle minus a point, okay, is same as R. Similarly, you may prove this in R2. So see, this is R3. Okay, so what I can do is make a sphere. Okay, so this is an sphere. So I omit this point. This is n is 0, 0, 1. So this is x, y, and z. Okay, this xy axis is same as R2. XY axis is same as R2, and this z is R. Okay? So do the same thing from here. S2 is the circle, not circle. It's S2 is the sphere. In R3, S2 minus 1 point, that is 0, 0, 1. Okay, is same as R2. The idea is exactly same, but what is the idea? You have for a point in say this point in the sphere. Okay, this point is in the sphere. Say this is x naught, y naught, z naught in S2. So this means it satisfies x naught square, y naught square, z naught square equal to 1. Okay, you want to find a map which sends this x naught, y naught, z naught to a point in R2. Okay, in R2 means in xy plane, in this plane. Okay, so for that, what you will do, you connect, you will connect this
north pole and this point x0, y0, z0 via a line. You will extend this line. It must hit xy plane at a single point. That point will be so you have to find that point. Says this is u0, v0, and the last coordinate will be 0. Okay, so the idea is literally same. Please do it your own. Do it your own. Okay, it is very interesting example. Okay, and I think you have seen in this example in your complex analysis course. Have you seen this in complex analysis? नो सर. नहीं देखा. ओके, तो इसको खुद करिए आप. This is an exercise and you may discuss this in group as well. Okay, so let us now recall again the definition of homeomorphism. So a homeomorphism is a map which is bijective, which is continuous, and inverse is also continuous. Okay, so is there any relation between these things? Continuity and inverse is continuous. So when we talk about inverse continuous, this means it is bijective. It is given that. So whenever we talk about inverse, this means function is bijective. Okay, then only we can say a function is invertible. If function is not bijective, then it cannot be invertible. So first question, give me a map or a function which is continuous but not bijective. Can anyone give me this map? अरे भैया चुप क्यों हो? ये क्या है भाई, आज केवल 4 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अनुराग, यस सर. क्या आप लोगों को मेरे मैसेज नहीं पहुंचा? सर मैसेज पहुंच रहा है, शायद 9 बजे से आज कॉम्प्लेक्स का टेस्ट है, तो शायद इस वजह से ना ज्वाइन हुए हो. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहाँ है आज? ये तो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे कोर्स में नहीं है. अरे ऑपरेशन रिसर्च का टेस्ट है. अच्छा, टेस्ट स्टार्ट हो गया? सर टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको लेना, उन्होंने ले लिया. मतलब उनको सर को लेना तो उन्होंने ले लिया. सर सर के कितना सिलेबस कंप्लीट कर दिया? सर का शायद 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है. अच्छा, ओके. यार ये तो बड़ा गलत कर रहे हो आप लोग. क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये इंटरेस्टिंग सा चल रहा है, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है क्या इसमें? सर आ रहा है, तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं. सर क्या है, ये लोग मूड खराब कर देते हैं ना. बात ये, अभी 4 लोग हैं, बाकी लोगों की क्लास छूट जाएगी. मुझे बता देते तो मैं अपने टाइम पर रखता. फिर 12 बजे भाई, इस समय रखने का केवल एक कारण यह है कि आप लोगों के पास नेटवर्क ठीक रहता है. बाद में आपका डाटा खत्म हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है. तो सर आप या फिर इसको आगे. हेलो, हाँ बोलिए. तो इसको फिर जो हाफ क्लास है या तो 12 o'clock कंटिन्यू कर लिए सर. इसको मैं एक काम करूंगा, मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको. ओके सर. बताइए, ये आंसर दीजिए इसका. हाँ, ये निहारिका ज्वाइन करी थी, वो भी चलेगी? ओके.
तो एक एग्जांपल देना है फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव मींस इट इज नॉट 1 1, इधर नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, ऐसा कुछ दोनों में से कोई एक भी या दोनों ही ना हो। क्या कोई ऐसा फंक्शन दे सकते हैं आप? इतना क्यों सोच रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। Sir, fx from R to अर्पित? R, नो सर। where fx is equals हाँ, to x square. f from R to R, okay, fx equal to x square, yeah, this is continuous, this is ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज हम अगर 1 का मैप निकालते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा, बट उसके बाद 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आया, या फिर 2 और 4 के बीच के पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस तरीके से ये और 1 हो सकता ये है, ऑन 2 नहीं होगा। आपका नाम क्या अर्पित है या अनुराग है? जी, सुभाष है? दिस इज अर्पित। अर्पित, जब आप रियल नंबर कहते हैं ना तो उसमें केवल 1 2 ही नहीं होते, 1 के यहाँ इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। आप ये कैसे कह सकते कि 3 नहीं है? स्क्वायर No, रूट 3 तो not है in ना the वहां domain. पर। I was talking about in the codomain range. अरे तो भाई, हाँ तो भैया रेंज में है, एफ ऑफ रूट 3 इज 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? अर्पित? Yes, sir. I think you're right. ले ले तो बताइए, ये आपका देखिए एग्जाम्पल आपने ठीक दिया है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, इसका बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? कंटिन्यूअस है या आपने पढ़ा? हेलो हाँ? सर, हम हाँ नंबर ले ले। बोलिए, कौन बोल रहा है? आपका नाम क्या है? सुभाष, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सुभाष। धीरे बोलिए, बताइए, बोलिए धीरे सर, धीरे हम बोलिए। नेचुरल नंबर ले ले। हाँ, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ओके। फिर सॉरी, नेचुरल नंबर 2 कहाँ, मैप कहाँ? रियल नंबर में। ओके, क्या है मैप, क्या है? सर यही मैप तो यही, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले। हाँ, ओके। सुभाष, आप बता सकते हैं ये मैप बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा? एफ फ्रॉम आर टू आर, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, क्यों नहीं होगा? अनुराग? यस सर। Sir, I have got because it is not 1 1. क्योंकि सर -1 का वो इमेज भी 1 होगा और 1 का भी इमेज 1 होगा। हाँ, दिस इज नॉट 1 1, बट आपको देखिए, आप अपने पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ओके? आप एमएससी सेकेंड ईयर में हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप ये बोलें कि 1 का स्क्वायर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पर 3 नहीं है। ये आपसे ये अपेक्षित नहीं है, प्लीज इसको आप चाहे बुरा माने या जैसे भी आपको लगे, लेकिन ये मुझे बोल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे, जिससे कि आप पढ़ें आगे, ओके? मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं हूँ कि आपको अच्छा बोलूं, बिल्कुल ये आपसे बिल्कुल अपेक्षित नहीं है कि आप इस मैप को बाइजेक्टिव न होने का कारण, लास्ट में आपने अभी ठीक दिया है आंसर, लेकिन पहले जो था वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअली आप सर आई कहीं एम सॉरी इंटरव्यू दे, सर, क्योंकि मैं मैंने इधर बता रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया सर, सॉरी सर।
रियल नंबर क्या होता है? देखिए, सॉरी होने का कोई मीनिंग नहीं। मुझे सॉरी से क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, कल के दिन कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बेशक आप बीएड करें या कहीं पीएचडी करे जाएं, मान लीजिए ये छोटा सा क्वेश्चन वहां दे दिया, तो वो केवल इतना कहने के भर के बाद आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इतने भर से। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा क्लियर रखें अपने को, ठीक है? थोड़ी सी चीजें अपना कॉन्सेप्ट हल्का क्लियर रख के जाइए। आप मुझे ये भी बता सकते थे, इसका ग्राफ देखिए आप, ऐसे हैं आप, यहाँ पर मुझे ये वाला कोई भी पॉइंट लो, मुझे दो इसके इमेजेस मिल रहे हैं, एक एक इमेज ये है, एक प्री इमेज ये है, ओके? और दिस इज नॉट ऑन टू बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर्स का कोई भी प्री इमेज नहीं है, so these numbers do not have any pre-images. Okay, so negative real numbers do not have any pre-image. Okay, so good, you have given one example, but okay, finally you got the answer. That's correct. The simplest example is the constant function. Okay, so f from R to R, fx equal to say 10, or say any real number, but it is constant for all x in R. So this is the simplest such example. This is continuous. This is not on 2. This is not 1, 1. Okay. So another example, second, find a map. Find a map which is bijective, okay, but not continuous. Bijective but not continuous. So it will be 1, 1 on 2, but it is not continuous. Can you give me such example? अनुराग, अर्पित, सुभाष, प्रीति, क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? अच्छा, अभी तो प्रीति भी चली गई है, 1 2 3 4, अजय मीना नए आए हैं। अजय, हेलो, यस सर। कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसमें जो बाइजेक्टिव हो और कंटिन्यूअस ना हो? So this is an exercise for you. I will definitely ask this question in the test. Okay, so देखिए ये क्या होगा। Now third is, can you give me a continuous bijection? Bijective, it should be bijective map, bijective and continuous, but not open. Can you give me a map? I tell you that we have seen such example. We have seen one of such example. So a bijective map which is continuous but not open. Okay, if you remember, we have seen this identity function from R with the usual topology. Oh, sorry, with the lower limit topology. Okay, RL lower limit to R with the usual topology. Okay, so this function is this function is bijective. So I think you must remember this. This is bijective, this is continuous, but inverse is not continuous. Okay, inverse map is not continuous. So this is example of bijective, continuous, but not open map. Okay, since every invert, so if a map is open, then its inverse is
Okay, if a bijective map is open, then its inverse is continuous. Okay, so here is another example of the same shape type. Means we have a bijective continuous function whose inverse is not continuous, okay, or which is not open. So here is the map. So take S1. S1, you all know now what is S1. S1 is the unit circle. So all those xy such that x square plus y square equal to 1. Okay, this is unit circle centered at origin R2. And consider subspace 0, 1 in R. Okay, so define a map F from this subspace 0, 1 to S1 given by f of t equal to cos 2 pi t comma sin 2 pi t. Okay, आपको याद होगा आपने जब 11th या 12th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो आपने इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन याद है आपको? सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता था? हेलो, यस सर, अनुराग पढ़ा है ना सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन? आप लोगों ने सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर। पढ़े हैं ना? उनका पैरामीट्रिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी साथ में। यस सर। हाँ, तो आपको याद है सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन cos थीटा sin थीटा होता था बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। x की जगह आप cos थीटा रख देते थे, y की जगह sin थीटा रख देते हैं, तो वो उसी का यूज किया हमने। अब क्योंकि ये जो 2 पाई t इसलिए लिखा है क्योंकि 2 पाई एक पूरा 360 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 मेरा t जा रहा है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कल हमने बोला था ना, कल अगर याद हो आपको, नहीं रही, हमने स्केलिंग पढ़ी थी। हम 0, 1 को मैप करने वाला एक 0, 1 को 0,2 पाई में मैप करने वाला फंक्शन क्या है, वो था 2 पाई टी 50 इक्वल टू 2 पाई टी। तो मैं उससे कंपोज कर दिया, ठीक है? दिस इज नॉट टफ थिंग, सो आई विल स्किप दिस पार्ट। ये वाला आप खुद देखिए, ये क्यों हमने cos 2 पाई टी और sin 2 पाई टी लिखा है। ओके, then f is bijective. So that f is bijective, it's clearly f is bijective. F is continuous. Why? Because t goes to cos 2 pi t. This, okay, why this is continuous? Let us see this. So this function is so call this f1 and f2 is t goes to sin 2 pi t. Okay, so these functions are composition of two functions. Number one, say g1. G1 is from 0, 1 to r. Sorry, 0, 1 to, I should say 0, 2 pi, given by g1 t equal to 2 pi t. कल हमने देखा था कि स्केलिंग वाले जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं। ओके, सेकंड फंक्शन, call it g only, not g1, g only. Second is h1. h1 from 0, 2 pi to s1. Okay, sorry, to r. h1 t equal to cos t. You know this cos t is from your real analysis course, you know this function is continuous. h2t is sin t. Okay, this is also continuous. Now, what is f1 and f2? f1 and f2, f1 is h1 of g. Okay,
This is composite of two continuous functions, therefore F1 is continuous. F2 is H2 of G. This is composition of again two continuous functions, therefore F2 is continuous. And we have this map F, which is nothing but F1 comma F2, okay? And both coordinate functions are continuous, therefore F is continuous. So F is continuous. But F inverse is not continuous. To see this, let me make a diagram here. So this is 0, this is say 1, and F will map this part to this circle, okay? S1. अब आप क्या करें? So we have to show that F inverse is continuous. This means, sorry, F inverse is not continuous. This means we will show F is not open. We will show F is not open. Okay. So for this, what we do, we will take an open set here. Take this 1/4. Okay. This is U open. Take U equal to 0 comma 1/4. This is open in 0 comma 1 subspace topology. Okay. What is its image under F? What is its image? Image will be, so cos 0 is cos 0 sin 0 is this point. Okay. Cos 0 1 होता है, ये 1 comma 0 वाला point है. Okay. So this is, what is 1/4? Cos 2 pi. So pi by 2 sin pi by 2. So this will be this point. Okay. So here we will take closed. Here we will take open. Okay. So this segment, okay, but this segment is not open in S1. Why? Because it is closed here. You see, this part is closed here, this part is open here. So so this is my FU. Clearly FU is not open. Not open in S1. This implies F is not open map. F is not an open map. Okay, hence F inverse is not continuous. This means F is not a homeomorphism. So question was, find a bijective continuous map which is not a homomorphism. Answer is either this map or the identity map to R. Okay, this is another example. Is this okay? Yes, sir. So here is another observation for this example. So if we write this map Fh, so what was our F? F is 0, 1 to S1 given by Ft equal to cos 2 pi t sin 2 pi t. Okay. Now let us expand its codomain and make it R2. So g of t is cos 2 pi t sin 2 pi t. Okay. For all t in 0 comma 1. So question is whether this 0 1 embedded in R2. Answer is no. You know, so what is an embedding? Embedding is a continuous. So embedding is this. So G would be embedding if H from 0 1 to G of 0 1. Okay, HT is same as GT. If this map
is a homeomorphism. You know, but this map is not a homeomorphism. So therefore, this is an example of continuous injective map, which is not an embedding, which is not an embedding. Okay. Do you see this? Is this okay for on? Yes, sir. Okay, so here are some results for. Okay, so you do not need this color. Okay, so some results for exercise. So prove that metrizability is a topological property. This means if you have a metric space XD, you know XD, any metric space is a topological space, and you have a topological space Y tau. If you have a map F from XD to Y tau, which is a homeomorphism, then Y tau will also be a metric space. Okay, so this is what you want to prove. So find a metric coming from metric on Y coming from this homeomorphism and this metric D. Okay, so and you have to show that the topology generated by this metric is same as tau. Okay, so this is one part. You all know now what are isolated sets. So a set is isolated if E a set E in a topological space X is isolated set, or sometimes we say discrete set, if E intersection its derived set is empty, means it does not contain any limit point. So example, set of integer in R. Set of integer in R is isolated set because you know when you take Z and its intersection of Z and its derived set, you get empty set because integers do not have a limit point. Okay, so being isolated set is also a topological property. So this means if we have a homeomorphism from X to Y, okay, then F maps every isolated set of X onto an isolated set of Y. Okay, so so this is an exercise. So do this your own. If you read my notes, you will see some answer of some of them. And the last thing that I will give as an exercise is the following result. So we have two topological spaces and we have a homomorphism. Hello. हाँ बस मैं बंद कर रहा हूँ. F is a homeomorphism if and only if F a bar equal to F a bar for all A. Okay, do this your own. I'll stop here. Drop your attendance now. Thank you, sir.